Assalamualaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 chapter number 1 lecture number 4 series of lectures continue कर रहे हैं. Chapter name is physical quantities and measurements. आज हम पढ़ने जा रहे हैं physical quantities. Physical quantities क्या होती हैं? Physical quantities are those quantities which can be measured. ऐसी तमाम मिकदारें जिन्हें हम नाप सकें, उन्हें माप सकें, हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर दो क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड. इसके साथ दो इसकी कंडीशंस हैं. दो कंडीशंस क्या हैं? एक तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी शुड बी नेसेसरी, एंड द अदर इज यूनिट मस्ट बी देयर. मैंने एग्जांपल लिखी है. टॉलनेस ऑफ बॉय इज 104 सेंटीमीटर. इस एग्जांपल में 104 is a magnitude of that quantity, and whereas cm mean centimeter, which is the unit of that quantity. So we have two conditions. One condition is magnitude is necessary, the other is for the physical quantity is unit of that quantity. Magnitude और unit का होना बहुत ही लाजमी और जरूरी है. नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है 5 kg ऑफ राइस. 5 kg ऑफ राइस हमें एक क्वांटिटी का पता देते हैं. क्वांटिटी में इफ आई एक्सप्लेन इट 5 ऑफ राइस, I met with the shopkeeper and it says 5 of rice of 5. तो कोई मीनिंग नहीं देगा. 5 ऑफ राइस इज मीन क्या 5 में चावल के दाने चाहिए क्या, या 5 चावल चाहिए, या 5 बैग चाहिए, तो कोई मीनिंग नहीं है. दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड, the numeric value is very much necessary. Other is if I go to a shopkeeper or any store, I says kgs of rice I needed. kgs of rice mean कोई मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, कुछ हमें पता नहीं दे रहा कि कितने 100 kg चाहिए, 1 kg चाहिए, हाफ kg चाहिए. सो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों का एक वक्त में फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने में होना जरूरी है. दीज आर द नेसेसरीज. व्हाट आर नेसेसरी? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट. इफ आई से आई वेंट टू द शॉपकीपर एंड सेज 5 kg of rice I need it. There is a complete statement which is not ambiguous to the shopkeeper. 5 kg mean 5 kg of rice, not more, not less. Then the physical quantities are divided in two sub quantities which are called base quantities and derived quantities. Base quantities, what are base quantities? Base quantities are quantities which form foundation for the other quantities. Such quantities which are used as a standard and they help to form, they give foundation for the other quantities to be developed on basis of them. These are called base quantities. Derived quantities. What are the derived quantities? Derived quantities can be obtained by the combination of two or more base quantities. Those quantities which have a foundation of base quantities, and they are developed on the basis of base quantities, not a single. If there is single, that is not a derived quantity. Two or more condition is there. When two base quantities combined, and they make the derived quantities. I further explain it in this columnic shape: base quantities and derived quantities. Physical quantities in terms of which other quantities can be obtained. ऐसी quantities जिनकी बुनियाद पर दूसरी quantities को अखज़ किया जा सके, इन्हें हम base quantities कहते हैं. Number next point I have written, there are 7 base quantities. 7 basic स्टैंडर्डाइज्ड क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं, इन्हें हम, और ये बेस क्वांटिटीज होती हैं. बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर.
बेस क्वांटिटीज की एक और प्रॉपर्टी क्या है, वो एक दूसरे से आजाद होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, ना ही वो एक दूसरे से माखूज है, obtained from each other. I have written 7 base quantities: length, mass, time, current, temperature, amount of substance and intensity of light. रोशनी की शिद्दत, लेंथ लंबाई, मास कमियत, टाइम वक्त, करंट टेम्परेचर हरारत, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मादे की मिकदार एंड रोशनी की शिद्दत. Opposite side in next column I have written derived quantities. From there to here, those physical quantities which are expressed in term of base quantities. ये इसकी सेकंड डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं. वो क्वांटिटीज जिनकी बेस जो है वो बेस क्वांटिटी होती है, जिनकी बुनियाद बेस क्वांटिटी होती है और उन्हें एक्सप्लेन भी उन्हीं उसी बुनियाद पर किया जाता है, इन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. Quantities can be obtained by multiplying or dividing two or more base quantities. इन quantities को हम कैसे हासिल करते हैं? We get them from multiplying or dividing base quantities. Base quantities को हम multiply करके या divide करके हम derived quantities हासिल करते हैं. और एक और कंडीशन जो दूसरी दफा लिखी है वो है इनका दो या दो से ज्यादा होना जरूरी है. Here I have written few basic derived quantities. It doesn't end here. It continues all over the book and they are in hundreds. Base quantities stop here at number 7. These are base quantities. But the derived quantities continue. In our book it is more than 200. So here few of them is written: area, volume, speed, acceleration, force, pressure, work, power. These are derived quantities. Dear students, you have a home assignment question number 1.2 plus for in viewing the board. Physical quantities, definition of physical quantities, base quantities, definition of derived quantities, and memorize base and derived units. Thank you all.